Okay, so now I want to touch upon the last few topics, which is my favorite, possessions. Yeah. I really want to understand this because हम सबने कहानियां सुनी है कि Yeah, देखिए ऐसा हुआ था, देखी भी हुई है किन किन लोगों ने. मुझे कुछ कुछ मिथ्स हैं जो मेरे दिमाग में भी है या मेरे साथ जो मुझे भी पूछे गए हैं. Is it a really a myth or does that happen? First of all, can a spirit possess a physical form of a human being? Now, when you mean by possess, do you mean the Ego. way you have seen in movies, or you want the real answer? I want the real answer because movies Yeah. is creative liberty. So it doesn't happen like in movies. Possession, simple words, is called spirit attachment. Let's call it that way. It's attachment. For example, you and your wife, for example. Now, if your wife is sad for some reason, but when you are just talking to her or she is talking to you, there is no way you are going to be feeling happy about it. आपने उनका सुना, you are affected now. So basically, that is attachment. Because you're attached to your wife, the emotions she is going through, you are reflecting. अटैचमेंट में कोई भी जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये वन सिम कार्ड फोन है, एक ही सोल जा सकता है. इसके अंदर डुअल सिम नहीं होंगे, दूसरा एंटिटी नहीं घुस सकता जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा है. सो व्हाट द एंटिटीज डू इज दे अटैच टू इट, लाइक विक्रम बेताल. से बेताल चिपक गया था विक्रमादित्य के पीछे. सेम एंटिटीज आल्सो लैच ऑन टू इट. लैचिंग ऑन टू इज द वर्ड. कोई इंसान है एंड देयर इज एन एंटिटी अटैच्ड टू इट. द एंटिटी इज एंग्री, द पर्सन विल बी एंग्री. एंटिटी इज लाफिंग, he'll be like, हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? So that also is like reflect कर रहा है, मतलब he just mirroring what this entity is doing. Now why this person is not aware, like आपने कहानी सुना होगा कि पोजीशन के बाद वो इंसान को पता नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ. वो उठा नींद से and he has no idea of the day. Ideomotor effect. Consciously you are totally out of zone, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, but subconsciously सब स्टोर हो रहा है वहां पे. But consciously you are so driven by that emotion of something around you, because आपको feel हो रहा है कि यार मैं सही नहीं हूँ, something wrong with me. Like you get that feeling when you are about to catch a fever. Something wrong with my body. You consciously are so much into it, you have no idea कि you are wasting hours, wasting time and जो कुछ भी है, and then fever होता है, वो बात की बात है. But consciously you are so much trying to understand the attachment part, you have no idea of the actions you are doing. Very great example is Bhul Bhulaiya में विद्या बालन. Correct. No possession. There is no possession at all. यहाँ पे तो मैं possession का example दे रहा हूँ. But विद्या बालन के केस में possession तो था ही नहीं. So when you talk about possession, I'll circle back to the real possession. But before that, it is important to know, lot of those cases, out of 1,000 cases, एक केस मिलेगा जहाँ पे actually possession है. Rest of them are mental issues. जो कि again because of our conditioned mind हमको पता नहीं है. Or sometimes people just get very influenced. For example, your best friend, for example, अगर best friend ने बोला कि भाई आज रात को आ दारू पीना है करके, even if आपका तबीयत खराब है, या लेके आता हूँ मैं. अगर बुरा अच्छा दोनों ही आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. द सेम वे अ पर्सन जिसका not self esteem but who has a very weak aura, थोड़ा सा कम self respect है, they get influenced by bad people very easily. People who connect to serial killers, people who fall in love with serial killers, people get affected by it and they start doing like the copycat killers जो बनते हैं. Sometimes you also get influenced अच्छे तरीके से कि मैंने शाहरुख को देखा, मेरे को शाहरुख जैसे बनना है करके. Example. The same way, when a person connects to a particular story, you end up बार बार वो story को पढ़ते हो. The same way, if we start believing in that story, we become that story. And अगर कोई आपको वहाँ पे snap off करने के लिए नहीं है कि भाई निकल वो दुनिया से, तो आप वही बन जाओगे. Lot of those characteristic we take of ऐसा हुआ है. It's a study that has been published that we take on the characteristic of the actors or the characters we see on a series or in a movie if we connect their life stories. आप भी स्ट्रगल करके बड़े स्टार बने हो, मैं भी स्ट्रगल करके कुछ बनना चाहता हूँ. This is my inspiration. Good bad, it can be both. The same way, अगर हम भूल भुलैया की तरफ आए तो वहाँ पे अवनी, बेसिकली विद्या बालन, she
got connected to that girl's story because उसके बचपन में भी वो उसके दादी के पास she used to stay. So Manjulika's story felt very connected to her of betrayal and love and everything, and she's like, you know what, this is so similar to me, and because it is so similar to me, she is my inspiration. Now inspiration becomes obsession very very quickly when you become कि मैं ही हूँ, मैंने ही किया था मंजुलिका, and that's when she starts dancing and starts doing thing and जो कुछ भी मूवी में हमने देखा है. So ये भी होता है पोजीशन में. This is not a mental issue, but we get so obsessed that we have no idea कि हमने वो threshold cross कर लिया है of self-esteem and now we have become someone else. हमने अपना character छोड़ दिया कहीं पे. So it needs a proper diagnosis जो कुछ भी है. People with schizophrenia, again इंडिया में नहीं पता, ये सब चीज़ों कोई नहीं बात करता है. Schizophrenia हो गया, there is a term called dissociative identity disorder, DID, multiple personality disorder. All those things are not talked about. As a result, the moment it happens, people think तांत्रिक के पास लेके चलो. माता ये कुछ ऐसा कुछ उसको जो भी पकड़ है. लिया है. Yeah. Now, if of course I'm not telling all the tantrics are bad, but by chance कोई bad मिल गया, and majority bad ही मिलता है, because ऐसा होता है ना, जब इंसान को हेल्प चाहिए होता है, वो कहीं भी जाके घुस जाता है. एज ए रिजल्ट वो एक्सप्लॉइट करेगा. बट अगर आपने लेके उसको एक डॉक्टर को दिखाया होता, डॉक्टर ने बोला होता है कि भाई साहब, you know, I don't quote me on this, but what I have heard is that if a person is schizophrenic, if you play along, their symptoms will increase. If a person says कि you know मेरे को कोई दिखा वो विंडो के सामने खड़ा है करके, and the family is saying कि हाँ यार हो सकता है इसको कुछ तो दिख रहा है, उसके symptoms और बढ़ेंगे. So there has to be someone who say कि नहीं कुछ नहीं होता, ignore, you do this thing करके. But हमको knowledge नहीं है इसके बारे में, so हम बोलते हैं कि हाँ ये है.